I'm talking today to yet another individual who lives for others. Vaishnav jan to tene kahiye je peed parai jane re. And this time, it's not people, it's animals. And it's not just animals, it's the stray animals who have no one. Kaveri is a savior and a warrior and a mother to such. Her work over the last few years has helped probably more than 3,000 dogs, cats, and also some other animals. Let's talk to her to find out where she gets this inspiration and expression from, what keeps her going, why does it keep her going, and the difference it makes to all of us. Kaveri, welcome on Small Big Wins. Thank you, Harshi, and thank you so much for having me here. And it's good to have such a platform to speak about the ones who can't speak for themselves. Thank you so much. So you know, the thought which I portray, or which I try to tell to other people, that you know, that inspirational one single liner, it's not for ourselves alone. So the moment we start believing in this, that we are not on earth just for ourselves, but for other things which have been put in the ecology by, maybe you call Paramatma or God, or by the ecosystem, and it's actually our civic responsibility to protect each of it, be it a plant or a water body or an animal or a human for that matter. So my inspiration has been enormous, and as in multiple sources of inspiration, starting from my childhood. My father is a doctor. He is a human doctor, not a veterinarian. But we used to, he used to get posted in rural areas, गांव वाला area होता था, and वहाँ पे भी जानवर होते थे जिनको चोट लग जाती थी. And he used to pick them up. छोटा पपी उठा लाए, किसी दिन गाय का चोट लगा बच्चा उठा लाए, and he used to nurture them, he used to nurse them to health, and then he used to either get them adopted, या फिर वो उसको वहीं के वहीं जहाँ से लाए थे वहीं वापस उसको relocate कर देते थे. And I used to ask him कि आप सारा दिन इंसानों का ट्रीटमेंट करते हो, how do you even get time, or how do you even think about it? And then he told me this, not for ourselves alone, ये पढ़ा तो मैंने बड़े होके, but he told it to me in his own unique way कि बेटा 2 मिनट निकालने से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो हमारे पास तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं. So why can't we just 2 minutes of our time and you change a life? इंसानों की सब करते हैं, जानवरों को तो कोई नहीं देखता. And that was the first lesson of compassion which I got from my own father. And then there were dogs and cows and animals in my house ever since I was growing up. My father hails from a village in Muzaffarnagar, and it's a farmer's family. So he was the only one जो पढ़ लिख कर doctor बनकर he got settled. Otherwise, rest of the family is in farming. And मेरा brother उसने रुड़की IIT से engineering pass out किया है, but वो farming करता है. So that is the passion of the entire family. And then because we are associated to the root at the farming level, तो वो जो जानवरों के साथ में interaction है वो by default है. It's important to understand we need them more than they need us. है ना? तो क्यों करना है, मैं पूछती हूँ, क्यों नहीं करना है? और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं ही क्यों? बिग क्वेश्चन. जब ग्रेटर नोएडा आई 10 साल पहले, यहाँ कुछ नहीं था. आते ही मेरा 6 साल का देसी मेरा पालतू डॉग है, वो खो गया. मैं मारी उसको 18-19 दिन ढूंढती रही, पूरे ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद, नोएडा, हर जगह ढूंढा. जहां किसी ने बोला उस जैसा कुत्ता है, मैं जाती थी. मैं और मेरे हस्बैंड भागे जाते थे. उन 18 दिनों में वो मुझे 18 दिन बाद मिल गया. और उन 18 दिनों में मुझे इतने जानवर मिले जो इतने बीमार थे, इतनी दयनीय हालत में थे, नालियों में छुपे हुए, चोट लगे हुए, कटे फटे हुए. और मेरा डॉग तो मिल गया, बट उनका कोई नहीं था. और वहीं से ग्रेटर नोएडा में मैंने बहुत थोड़ा करके, मतलब बहुत, मैं कोई करोड़पति जायदाद वाली नहीं थी. मैं और मेरे हस्बैंड अपना इंटरनेट मार्केटिंग का काम करते थे. उससे जो भी इनकम आती थी उससे हम अपना घर चलाते थे, और फिर थोड़ी सी इनकम हम बाहर के बच्चों पे लगाते थे. अब हमने नहीं सोचा था ये करते करते फुल टाइम जॉब बन जाएगा. बट जब आप
देखते हो ना तो आपको दिखने लग जाता है। जब आपको एक इंजर्ड जानवर अगर आपको एक बार दिख गया और आपने मदद कर दी, तो ट्रस्ट मी आपको इंजर्ड जानवर बार बार दिखेंगे। जो इग्नोर कर देते हैं उनको तो कभी नहीं दिखते, पर जो करने लगते हैं उन्हें दिखते हैं। तो ये फुल टाइम बन गया। हम धीरे धीरे जितना कर पाते थे करते थे, डॉक्टर्स की मदद लेते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, घर पे रखते थे, ठीक होने पे वापस छोड़ देते थे। फिर 2017 में सोफी की डेथ हो गई। जो मैंने आपको बताया था, मेरी 12 साल की इंडियन देसी डॉग थी, जिसने मुझे पुश किया कि नहीं करो, तुम ही करो, यू कैन डू इट। और मैं कोई भी डॉग उठा के लाती थी, पपी उठा के लाती थी, वो मुझसे ज्यादा उसका ध्यान रखती थी। तो जब वो चली गई तो मतलब वर्ड क्या यूज करूं, लाइफ में एक वॉइड आ गया। मेरे से कोई काम ही नहीं होता था। 12 साल बहुत होते हैं किसी जानवर के साथ रहने के लिए, और वो भी तब जब वो इंटीग्रल पार्ट था आपकी लाइफ का। तो मैं एक्यूट डिप्रेशन में चली गई। मैं खाना पीना खाना छोड़ दिया, मैं बात नहीं करती थी, मैं घर से बाहर नहीं जाती थी। एंड देन माय ब्रिलियंट हस्बैंड, ही केम अप विद दिस आइडिया दैट व्हाई डोंट यू डू समथिंग इन हर मेमोरी। Yeah, you already do. And why don't you dedicate it to her? Maybe it will help you. And then he was the one who came up with the name Sophie Memorial Animal Relief Trust. That we are making it as a living tribute to her. Every soul that trust touches, we feel that we are closer to Sophie. So जो टारगेट है, जो आइडिया है, वो जानवरों की हेल्प करने के साथ साथ लोगों को ये समझाना भी है कि अगर हम उन्हें इग्नोर कर देंगे, उन बेचारों के पास अपनी पीड़ा कहने के लिए कोई नहीं है। अगर चोट लग गई तो वो सड़ गल के मर जाएगा अगर हमने नहीं देखा, और अगर हमने नहीं देखा तो हम सुपीरियर स्पीशीज किस बात के हुए। तो मैं यही चाहती हूँ, हर बंदा रेस्क्यू नहीं कर सकता, हर बंदा घर नहीं ले जा सकता, लेकिन हर बंदा चोट लगे जानवर को देखकर किसी को इन्फॉर्म कर सकता है ना। वो वहीं से वो छोटी सी हम एक पहल अगर कर पाए तो काफी कुछ हो सकता है। मेरे पास बहुत इंस्पिरेशन है। हर बच्चा, हर डॉग, हर गधा, हर गाय जिसकी मैं जान बचाती हूँ, जब उसकी आंखों में देखती हूँ, वो इंस्पिरेशन है और लोगों की जान बचाने के लिए। और फिर हमारे समाज में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे शहर की अथॉरिटी, मेरा प्राधिकरण बहुत हेल्पफुल है। अगर ये लोग नहीं होते साथ में तो इतना करना संभव नहीं था। तो छोटी छोटी बातों से, थोड़ा थोड़ा करके, सब मिलके हमने ग्रेटर नोएडा को इस लेवल पे पहुंचाया है कि हमारे यहाँ पर कोई भी जानवर सड़क पर बीमार नहीं पड़ा रहता। जैसे ही कंप्लेंट आती है, आधे घंटे से 1 घंटे में प्राधिकरण की मदद से या अपने वॉलंटियर्स की मदद से हम उस जानवर को रेस्क्यू करा देते हैं। और रेस्क्यू करके आप इसको, जानवर को आपके ट्रस्ट प्रेमाइसेस में लाते हैं? जी देखिए, रेस्क्यू भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें इमीडिएट वेटरनरी हेल्प चाहिए, जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। अभी मैंने जनवरी में एक डॉग रेस्क्यू किया था, उसको किसी ने चाकू घुसा दिया था। वो चिकन शॉप के आसपास रहता था, उसने टुकड़ा चुराया एंड बुचर ने नाइफ यूं फेंका, वो पूरा उसके रिब्स को पियर्स कर गया। अब जैसे ही मुझे कॉल आई, मेरे घर पे कोई नहीं था, मैंने अपने पड़ोसी भैया को बुलाया, घर पे लॉक लगाया, अपने डॉग्स को बोला रोना नहीं, मैं इस बच्चे को देखने जाती हूँ। वहां पे पुलिस भी आई, दे हेल्प्ड, उसको रेस्क्यू किया तो देखा नाइफ ऑलरेडी 4 इंचेस डीप था, 4 इंच डॉग को, और वो चुपचाप बैठा था ऐसे। उसको तुरंत नोएडा लेकर भागे, वो पूरी रात सर्जरी में था। तो ये एक तरह का केस है जिसमें हॉस्पिटल जाना इम्पेरेटिव है। फिर कुछ केसेस ऐसे आते हैं जो परमानेंट ब्लाइंड है, जो देख ही नहीं सकते, सालों से ब्लाइंड हो गए, उनको केयर और खाना और रहने की जगह चाहिए। वो सारे केसेस सैंक्चुरी चले जाते हैं। जिन्हें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए वो सैंक्चुरी जाएंगे, जिन्हें ट्रीटमेंट चाहिए वो पहले हॉस्पिटल जाएंगे। ये सब सिचुएशंस जब होती हैं एनिमल अब्यूज की, और आप जैसे वो बुचर शॉप में गई या उनके पास गई, किसी प्रकार का रेजिस्टेंस आपके लिए, हाउ डू यू मास्टर द करेज? बिकॉज इट्स नॉट इजी टू गो। और मतलब एक नॉर्मली हम बोलेंगे कौन इनके मुंह लगेगा, कौन इनसे बात करेगा, हम ही को कुछ मार देगा। नहीं, मुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि बुचर मार्केट में सारे एक जैसे नहीं है। वहां पे ऐसे बहुत लोग हैं जो कम्युनिटी डॉग्स को, बचा हुआ जो भी उनका वेस्ट बचता है ना, उसको रेगुलरली फीड करते हैं। चोट लग जाती है या बीमार होता है तो सबसे पहले मुझे फोन करते हैं और मैं तुरंत जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उस बच्चे की, उस डॉग की या जानवर की हेल्प करती हूँ। तो अगर 2 खराब है ना तो 2000 अच्छे भी है। तो मुझ पे कोई हमला कर दे या मुझसे कोई नाराज हो जाए, वो हो ही नहीं सकता।
साथ में फिर पुलिस प्रशासन हमेशा साथ खड़ा होता है। तो मतलब कहीं पर अगर ऐसा अब्यूज हुआ है तो हम तुरंत, मतलब मैं इंश्योर करती हूँ कि लोकल पुलिस वहां पे प्रेजेंट हो, कि किसी तरह का रेजिस्टेंस या लड़ाई झगड़ा हो ही ना। अवॉइडेंस इज एवरीथिंग। लड़ झगड़ के उसे संभालने से अच्छा है कि लड़ाई का मौका ही नहीं आए। तो होता है, लड़ते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, मुझे घेर भी लेते हैं, गुस्सा भी करते हैं, कुत्तों को घर क्यों नहीं ले जाती हो, तुम कुत्ता वाली हो, काफी कुछ कहते हैं। बट देन अगेन ये प्रोफेशन के साथ आता है। हर बंदा नहीं समझेगा कि मैं कुत्तों के लिए या गायों के लिए या गधों के लिए या इवन बकरियों के लिए आवाज क्यों उठा रही हूँ। लेकिन अपने आप को उनकी जगह एक बार बस रख के देख लें, आपको समझ आ जाएगा आवाज उठाना क्यों जरूरी है। अभी इट्स कुछ देर पहले टेरिफाइंग फॉर देम। और कुछ देर पहले मैंने कुछ बंदरों के बारे में भी सुना आपसे। हाँ, 3 है हमारे पास, 2 बच्चे हैं छोटे से। एक 15 दिन का रेस्क्यू हुआ था, उसकी मदर इलेक्ट्रोक्यूट हो गई थी एंड शी डाइड ऑन स्पॉट। वो बच्चा मदर की कंधे पे चिपका हुआ था, जब वो इलेक्ट्रोक्यूट हुई तो वो भी पूरा सर गर्दन सब जल गया था। तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमारे राम अवतार चौधरी जी हैं, बहुत कंपैशनेट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। उन्होंने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करी तो वो हटाने नहीं दे रहा था खुद को माँ की बॉडी से। बंदर बहुत ज्यादा इमोशनल और पॉजेसिव होते हैं अपने पेरेंट्स और बच्चों के लिए। फिर मेरे पास एक ऑलरेडी बंदर बच्चा फॉस्टर में था, तो मैं उसको साथ लेकर गई, उस बंदर बच्चे को उसके बराबर में रखा, तब जाके वो छोटे बच्चे ने माँ छोड़ी। तो उसको हम वहां से रेस्क्यू करके ले आए। आपके पास समय है, मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए मैं जी। आपको That would be सबसे wonderful. पहले तो मैं आपको अपनी उस 6 महीने की मेरी एक बंदर बेटी है, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्मगलर से रेस्क्यू किया था। उसको बेच रहे थे 3,000 रुपए में। तो हमें कंप्लेंट आई, तो हम ऑन साइट पहुंचकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के साथ हम पहुंचे। Oh, oh, oh. अरे हेलो बोल दो। So her name is Bandar, हाँ, and she's 6 months. So she's just 6 months, and she is a tantrum ball. She can play all day. She can break things all day. She climbs on top of my dogs all day. Gosh, that's her job, and she और loves me all day. और आप अपने आप को कैसे संभालती हैं इनसे? मतलब किसी प्रकार का कोई वार या नहीं, जानवर देखिए, जब जब आप चोट लगे जानवर को या वाइल्ड एनिमल को आप हेल्प करने जाते हो, तो जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है ना उनका, वो रिएक्शन डर का होता है। और क्योंकि वो जानवर है, इंसानों के साथ नहीं रहे हैं, है ना, तो उनका जो आइडियोलॉजी है इंसानों से वो काफी अजीब है। वो ये है कि इंसान ज्यादातर अच्छा नहीं करते, मारते हैं। आप समझ रहे हो, बंदर ने केला चुराया, कुछ मार दिया, तो वही वाला जी कोऑर्डिनेशन होता है। तो जब हम इन्हें रेस्क्यू करते हैं पहली बार, दे आर वेरी स्केयर्ड, बहुत डरे हैं। वाइल्ड लाइफ तो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये छोटे बच्चे थे, इनको मैनेज करना थोड़ा आसान हो गया। गोदी में रख रख के इनको बड़ा किया, हाथ से खाना खिलाया, बॉटल फीडिंग पे, मतलब 3 महीने तो बॉटल फीड पे रहे दोनों बच्चे। ऑन दी अदर हैंड, जैसे डॉग्स हैं, 90% डॉग्स रेस्क्यू में कुछ नहीं कहते। 90% ऑफ देम अंडरस्टैंड दैट वी आर ट्राइंग टू हेल्प। 10% होते हैं जो इतने डरे हुए हैं अपनी ही सराउंडिंग से, इनसिक्योर हैं, या चोट इतनी घातक है कि रिएक्शन ही दांत चलाना होता है। तो मैं बहुत केयरफुल हूँ, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। रेबीज का कुत्ता भी मैं खुद को बिना कटवाए पकड़ लेती हूँ। सो आई हैव लर्नड। एंड देन मेरी टीम बहुत अच्छी है, जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, जो वॉलंटियर्स मेरे साथ काम करते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी गुड विद एनिमल्स। How many volunteers do you have? वॉलंटियर्स हमारे ग्रेटर नोएडा में वी वुड हैव अबाउट 20+। स्टाफ मेरे पास परमानेंट आई हैव 6 people। एंड देन हम लोग स्नेक्स भी रेस्क्यू करते हैं। माय हस्बैंड इज नोन टू रेस्क्यू द scariest of cobras and pythons in the district, and he does it for free. Thousands of snakes rehabilitated in wetlands by him. तो ये जो ना जानवर हमला करेगा कि नहीं, आई विल टेल यू अ लाइव एग्जांपल। मेरे हस्बैंड एक बार मेरे ही सेक्टर में, ओमिक्रॉन 2 में, वी आर अ ग्रीन बेल्ट एरिया, है ना, वी हैव मेनी स्नेक्स। अब तो काफी रिहेबिलिटेट हो गए, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ देम। तो कोबरा निकलना आम बात है। किसी के घर में कोबरा निकल आया, पता चला कि पौने घंटे से पूरा मोहल्ला उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फ्रिज के बराबर में ऐसे फन फैला के बैठा हुआ है, एंड ही इज जस्ट डूइंग फू फू फू। ही इज एंग्री, नॉट गोइंग एनीवेयर।
तो जब मैं और मेरे हस्बैंड उनके घर में पहुंचे, वहां पे कम से कम 80 लोग थे। 80 में से 50 के हाथ में लाठियां थी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने डांट लगा के बाहर निकाला। मैंने कहा आप सारे बाहर निकलो, आपकी लाठी के चक्कर में ये पक्का काटेगा, नहीं तो ये नहीं काटेगा। चलिए, वो बाहर चले गए। कमरे का वातावरण थोड़ा सा शांत हुआ। एंड माई हस्बैंड अप्रोच्ड द कोबरा। ही वाज इतना दूर कि वो काट नहीं पाए, बट कोबराज आर वेरी डेंजरस, दे जंप एंड दे बाइट. And then my husband just stood there and with snake catcher in his hand, and then he just calmly stood there for 2-3 minutes. And that cobra was doing foo foo foo. He put his head down, went into a curl, and waited. Take me. My husband gently picked him in a catcher, and he put him in a sack from which we would take him to wetlands. He did not resist. And that is when, that was one of the most important lessons of my life, that if you are not threatening them, yeah, they reciprocate. It cannot happen every time, but if you actually do it right, they will reciprocate. He had the option of biting my husband. My husband's hand was just this far from him, but he didn't. The rest of the people, he wanted to bite them. He was throwing venom at them, so angry. So coexistence is something which, अगर मेरा बंदर और मेरा कुत्ता साथ रह सकता है ना, तो हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर जानवर कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इंसान को जानवरों के साथ कोएग्जिस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए कि क्यों करना है। आपने शुरुआत में कहा कावेरी जी दैट वी नीड द एनिमल्स मोर देन दे नीड अस। ट्रू। Please talk to us a little more on this. छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, गाय और भैंस है ना, बिगेस्ट सोर्स। मतलब हमारे यहाँ पे ब्रूटलाइज और अब्यूज बहुत होती हैं, जो नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ नेचुरल तरीके से मिल्क लें, जैसे हम पहले लेते थे जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घरों में जो दूध होता था, अच्छा खाना खिलाते थे, गाय भैंस अच्छा दूध देती थी, उसका बछड़ा खूब पीता था, घर के लोग पीते थे। अभी वो नहीं है, कोई बछड़े को पिलाना नहीं चाहता, बछड़े को उठा के फेंक देते हैं, and things like that. But ultimately, when you look down at it, 99.9% of Indian babies, they grow on cow and buffalo milk. So aren't they important? What would you feed them if there were no buffaloes and cows? How would you complete the requirement of a mother's milk if there wasn't a cow? So this is one example. Let's talk about dogs now. डॉग्स को लेके लोग सबसे ज्यादा गुस्सा है। मुझसे तो बहुत गुस्सा है, मुझे तो सारा दिन गालियां पड़ती हैं कि आप डॉग्स को क्यों बचाना चाहती हैं। मेन रीजन, नॉट जस्ट रिलीजियस रीजन, हम हिंदुइज्म में भी जा सकते हैं। डॉग भैरों का अवतार है। हमारे सीईओ सर ने हमारे यहाँ पे डॉग स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट भैरव रखा है। वो भैरों का है ना, मतलब दिस इज हिज वे ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्योंकि अगर सच्चाई और माइथोलॉजी देखा जाए तो वो वाकई में भैरों का अवतार है। हम हर श्राद्ध पे कुत्ता ढूंढ के खाना खिलाते हैं, लेकिन अगले दिन हम बोलते हैं इस कुत्ते ने मेरे घर के सामने पॉटी कर दी। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज आयरनी। वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। कुत्ता क्यों जरूरी है? कुत्ता चूहे को कंट्रोल में रखता है, कुत्ता गार्बेज को कंट्रोल में रखता है, कुत्ता वाइल्ड लाइफ को कंट्रोल में रखता है। ग्रेटर नोएडा में जहां पर सोसाइटीज में क्योंकि ग्रीन एरिया है, जो बॉर्डर की सोसाइटीज हैं जहां पे डॉग्स नहीं है, वहां मंकीज ने आतंक मचाया हुआ है। एंड व्हेन आई टॉक आतंक, मंकीज आर रूथलेस देन डॉग्स। व्हेन दे टेक ओवर एन एरिया, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। बीच की जो लाइन है जो हमें और हमारे बच्चों को बचाती है, वो डॉग्स हैं। अगर वहां डॉग्स खड़े हैं, मंकीज डेयर नॉट क्रॉस द लाइन। सो दिस इज just very small reasons. And then when we talk about चिड़िया, why are or butterflies और भंवरे pollination कैसे करेंगे, है ना? And how would you even keep that ecological pyramid in balance अगर हम जानवर हटा देंगे? Because when we see the ecological pyramid, human से ज्यादा जानवर हैं उसमें। human तो टॉप पे आ गया being the superior species, but उन्हीं के ऊपर बैठ के आया है ना। सामान लोड करना है, गधा चाहिए। गाड़ी में इन्वेस्ट हर बंदा नहीं कर सकता। हुग्गी चलानी है, भैंस चाहिए, बैल चाहिए। भूसा बेचने जाना है, गरीब आदमी है, बैल चाहिए, है ना? तो कौन सा जानवर है जो हमें नहीं चाहिए?
शुरुआत हुई शायद this was from the lesson of compassion which you saw from your father. Yeah, and I think it's genetic also. So how does your father see what you are doing? Oh, he is very proud. He is proud of the fact that I am more known than him in the entire country. He is very proud of the fact. So he's very proud. Initially, my mom was not very happy because my dad is a doctor. My mamaji is a doctor. So obviously my mother wanted me to be a doctor. And I was one person who had no interest, like zero interest. I was like, I couldn't do dissection. मुझे 12th class में वो white चूहा काटने का काम दिया मेरी biology की teacher ने. And I was like, I will tell you what is inside him, but I won't kill him. And she was like, I'll fail you. And I was like, you fail me. I will not do cruelty on an animal who is already not knowing what is going to happen to him. And I had a huge ruckus at school during my boards. So my dad had to intervene, and then he had to write to the principal that my daughter will not indulge in anything of animal cruelty, be it for her studies. And then there was a special examination conducted for me wherein I wrote everything word by word, that what is there inside a white rat, where is the heart, and then I cleared it, of course. But that was something which was inbuilt. I just couldn't do it. And then when I started helping animals, my mom was like, you couldn't see blood at one time, and now you are picking, animals who are just dripping in blood, and you are carrying them to what not places. But I'm happy that they are very proud. My mother-in-law, she is very proud. She just उनके पास कोई बात करने आ जाए वो सारा दिन मेरी बातें करती हैं कि मेरी कावेरी ऐसी है, वो इतना अच्छा करती है. So this gives you a lot of inspiration, thinking that yes, you have chosen the right path, and a path of changing lives. I think I have done the right thing. So every time you speak, you make me more speechless. And your husband, was he also an animal lover, or this kind of rubbed off from you? He was already one. So हमारा जो mutual connection हुआ while we were working, we were introduced by a common friend while we were working in the same company, and that was 12 years ago. And जो connection हुआ वो इसी बात पे हुआ. So he was outside on a break and he was feeding a stray dog. And I was walking towards the office with my friends, and the friend introduced me to him, and I just ended up asking him that, do you do it daily? And then just the conversation started, and we ended up knowing that we both are crazy for certain things which other humans aren't even interested in. And then it's like it's a joint partnership. I can't do what I do without him. So he's there. Every rescue I did for initial, at least 10 years, it was him who used to take me. Raat ke 2 baje, subah ke 4 baje, din ke 12 baje. So, and he rescued so many animals. He buried so many animals who were lying on road with his bare hands that I'm speechless to what he does. Usually I have seen partnerships fail because wife was crazy enough just to talk about dogs all day. But here, no, we are just like, we won't be able to function without each other if we were to talk about helping animals. What a blessing that is. The Sophie Memorial Animal Relief Trust. Tell us a little about the trust. Where is it? How did you put it all together? What were the challenges you faced? Sure. So everything started from home. As they say, charity begins from home. So when we launched Sophie Memorial Animal Relief Trust back in April 2017, we didn't have a place where we could, make a sanctuary or a shelter to keep animals. So we started from our rented home. Our landlords were amazing, amazing old people, and they were like very happy with my collection of everyday rescues. And every 15 days he used to call me, Kaveri, ab kitne ho gaye? So there was a time when we reached 65 dogs inside my home, out of which 48 were paralyzed, completely broken spines due to road accidents. And that was the number when me and my husband realized that यहाँ पे तो cope नहीं हो पाएगा, करेंगे कैसे? The घर छोटा पड़ने लग गया.
So then we looked out for a place nearby, in a nearby village on the outskirts. It was about 5 kilometers from my house. And we took one huge 6 kamra bana hua and an open space with a boundary building in 15,000 a month. So 3 years we run our shelter there, paying 15,000 a month. And month 3 of launching the shelter, I was bankrupt. So that is the bitter truth. I was bankrupt because once you start taking them in and people start believing in you, people start sending those cases with a lot of belief. And once you start taking those cases, there is no way that you will not treat them or you not spend money on them. You can only treat them by spending money on them. And then everything just went out. And I started running credit with my veterinarians. So 6 months down the line, once we had inaugurated the shelter, 6 mahine baad a friend suggested that, Kaveri, you will die. What would you do? So it's time that you start asking people to help you and the trust if you want to help more animals. And 6 months after building everything from our own, single pennies, 6 months later, we did our first fundraising campaign. And that's when people really started associating with us. And धीरे धीरे एक करके 100 रुपए से 200 से एक खाने के बैग से एक चावल के कट्टे से we reached at a place today wherein in last 6 years we have helped over 4,000 animals now. And I personally have gotten the sterilization done of 2,000 plus dogs in the city by my own. And then it's ongoing. So we have also started building another sanctuary in Uttarakhand. That's on the mountains of Uttarakhand near Narendra Nagar. Reason, nothing there for animals either. So no rescue center, nothing where they can get the first aid. So Uttarakhand मेरी जन्म भूमि है, तो वहाँ के लिए फर्ज बनता है करना. तो मेरे हस्बैंड का वहां पर एक रेजिडेंशियल का अबाउट 700-800 यार्ड्स का years से बहुत पुराना प्लॉट पड़ा था पूरा जंगल में. So we built it there. So it's under progress. I think in next 2 months we can start moving dogs over there also. तो ये 2 जगह हो गई हैं, and I plan to leave a little bit of what we do wherever we can set our feet into. The idea is to bring the change, not to be the change. I don't want to be the change. I want people to change after seeing what I do and what it does to the ecosystem. So the premises which you run in Greater Noida today? It's at the outskirts of Greater Noida, near that. Greater Noida today. Is that still on rent? Yes, it's not on rent. Actually, it's an agricultural land of a family who stays nearby. So they were not using that land for years. And they gave us permission to use it for 7-8 years by making whatever kind of structure we want for the animals. Okay. So we have built 8 pakka wala rooms with lenter. And then we have a Gaushala, which is at the separate part of the same building. And then we have a paralyzed area, which is just for the paralyzed or the dogs which can't walk on their own. So not on rent, couldn't buy it. It's very expensive over here. But yes, the gentleman and his family has been kind enough. So today it's year 3 at that place. So 3-4 more years we have. By then, I'm sure, we would be able to make something more permanent in Greater Noida. Yeah, these are wonderful examples of so many good people coming to help you in your endeavor. Yes. I am nothing without my benefactors. I tell them every day that if there are not people who support the cause, this is mission impossible. Because there are not enough believers. And if there are not enough supporters, how are you going to do it? The money is going to exhaust it one day. So yes, thank you to the brilliant people who are always there to help us. Clearly, you said that after 3 months and 6 months, you went completely bankrupt after you started the Animal Relief Trust. Yeah. So clearly, when you decided that you are starting this trust, it was not a calculated decision. It was a completely emotional calculated and emotional. What we didn't bank on was that we would get such a rush the moment we opened. Right. You think we were thinking that 4 to 5 cases a month we would manage because we were working also, right? Right. But
25-30 cases in a month. It's like 10 folds of the expenditure I had imagined. I had everything written down to the dot. But if I am going way beyond my capacity, then everything will be exhausted. So, and that time we didn't have our ATG also. I got my ATG just now. I am a little, मैं इतना busy होती हूँ that I don't pay attention to the very important things which are very much required. So ATG we have got. So now we are eligible for CSR. So, Okay. so there is a high probability that, in the near future, we might associate with some company and who can promote. I'm looking for promotion of the village areas. The animals in the village areas need the most attention. And me, with my resources, I'm not strong enough to reach each and every place. So a calculated decision, yes, but did not calculate it that the rate of admission would be so high. And once they were coming, you just couldn't say no. Well, you said you are not strong enough, but you are the force without being strong. So the time and the animals and the kind of things I see every day and the people support, I think it has made me into who I am. पहले मुझे public speaking में भी थोड़ा डर लगता था, अब तो मैं बड़े आराम से बात कर पाती हूँ. So yes, my confidence, my strength, it comes from everyone who has been there to support the cause. I learned that you are otherwise a mathematics graduate. Yes, I am. And you were working for different corporations before you came into the full time. Yes. So that moment when you gave up your job to come into the full time, that was triggered by what circumstances? So basically the trigger, it wasn't a trigger. It was a decision which was actually very well thought by my husband and me. When we were going into rescues, we knew that 9 to 5 shift is not gonna cut it. You just can't be, late at your job also. And if you are in a 9 to 5 shift, there is no way that you can run for a rescue for an accident which happened 10 kilometers away. Mm-hmm. So it was a very calculated decision. So when we quit working, before that, we set up our own internet marketing work. We started working as freelancers way before we quit working, so that it doesn't hamper the kind of life we had been giving to our rescue dogs and to our home. So it never that decision never impacted us in a bad way. It had always been a good decision. अगर हम उस टाइम नहीं छोड़ते तो शायद आज सोफी मेमोरियल नहीं होता. तो very well thought, but yes, हम उस टाइम छोटे भी थे, है ना. हमें लगता था सब कुछ हो जाएगा, it's very easy, रेजिंग भी हो जाती है, लोग हेल्प भी कर देते हैं, खाना भी आ जाता है. बट नहीं, आपको 4-5 साल बहुत ऐसी तैसी करानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके लोगों को भरोसा होता है कि हाँ, आप वाकई में कुछ कर रहे हैं. So I am glad that I am at such a point wherein my city knows what I do and why I do it. Complications हैं, लड़ाइयाँ हैं, RWA नाराज रहती हैं मुझसे, but slowly and gradually I'm trying to win their heart by telling them how to do it and how to coexist. So I'm sure I'll reach there. ऐसा फैसला जब लिया जाता है कि हम काम छोड़ रहे हैं और हम ये करने वाले हैं अब, which is more social, जहाँ पे visibility नहीं है, prediction नहीं है, income का, हाँ, नहीं है, भी होते हैं उस situation में, कुछ शंकाएं भी होती हैं. जी. आपको थी या you were completely over them? काफी थी, लेकिन पापा थे बैक पे ना, तो शंकाओं ने कभी ऐसे वाला ओवर पावर नहीं किया कि मतलब the family was there, so that support is enough for you to go on. तो मुझे पता था if I am failing or faltering or if I need someone to hold me and my husband, his mother and my father, they are there all the time. भगवान की दया से हमें कभी लेना नहीं पड़ा उनसे. मतलब we are very proud of the fact कि हमें जानवरों के लिए कभी अपने घर से नहीं लेना पड़ा. But then that feeling that you have the family is strong enough. Not many animal welfare people are lucky to have that kind of emotional support from their own family when you go completely into animals. But we are lucky, I guess. Indeed. आपकी शंकाओं पे तो शंकर खुद बैठे थे.
भोले शंकर तो हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, प्राण है, उन्हीं पे सारी बात शुरू होती है और रात खत्म होती है. एंड आई एम टेलिंग यू इट्स हिम who has his hands on every rescue of mine. Because I have seen cases जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से रेफर होकर आते हैं, जहां पर कुत्ते को यूथेनाइज, पुट टू स्लीप करने के लिए कह दिया जाता है. कुत्ता खड़ा नहीं हो पा रहा है, कमर 2 टुकड़े हो गई है. और ऐसे लोग आपको मैं विटनेसेस से कभी मिलाऊंगी जो आपको बताएंगे कि मेरे घर की मिट्टी में पैर रखते ही वो कुत्ता खड़ा हो गया. ऐसा भी हुआ है. मतलब ऐसा नहीं कि खड़ा हो गया और भागने लग गया, बट जिसको बोला था कभी खड़ा नहीं होगा, वो 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया. तो वो, और फिर उसके साथ जब ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन किया तो वो चल भी गया. आप सब, दैट इज अ लाइफ चेंजिंग फीलिंग फॉर द वन हु इज डूइंग इट. That tells you that if you are actually giving someone a chance and working hard on that chance, anything is achievable. Even broken spines can be repaired. I have got many dogs who came with broken spines and they are walking now. So nothing is not doable. It's just, do we want to do it? And today, what are the average number of cases you get every month? Daily 3 to 4. Daily? Daily 3 to 4. Not all of them are admission cases. Some of them are treatment cases. Some people are good enough to keep the dogs at their home and get treatment by us, which is obviously free of cost all the time. And then there are cases which you have to admit. There is no option but to admit them. So 3 to 4 average every day. And today your fundraising campaign and your fundraising abilities are able to take care of what you are doing. Yes. Thanks to the donors and thanks to one of the most important fundraising platforms which has been supporting Sophie Memorial since 2019, which is Milap. Yes, we have been able to provide everything which a dog might need, or which a cow or a calf or a donkey might need. That a knife surgery, that knife stabbing victim, 83,000 was his complete bill when he came out of the hospital to my home. So I wouldn't have been able to pay it if there were no fundraisers. I don't have that kind of capital coming in. So it's only doable because there are people who are there to help you. There are people who send me 10 rupees in donation. Yeah? And there are people who send me 1,00,000 in donation. The intent is the same. My thank you note and my dog bless to everyone is same, because the intent is what keeps me going. That inspiration which comes from seeing that 10 rupee donation, it tells me कि जिसने दिया है उस बेचारे पे 10 थे, उसने फिर भी दे दिए. You get that? That is such a strength you get from, from inside you when you see such people, that there are people जिनके पास नहीं है but they want to help. So which is I think all the strength and the courage a person needs to keep the will going. What were you, Kaveri, when you started this? And what are you today? जब स्टार्ट किया था तो थोड़ी डरी सहमी सी, सीधी तो नहीं कहूंगी, सीधी तो मैं कभी नहीं रही हूँ, बट डरी सहमी सी, लोगों से हेल्प मांगने में झिझकने वाली, मतलब शेल्टर ओनर आप कह सकते हैं, थी. आज की डेट में मैं झिझकने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ. मेरी तो सारा दिन ये कुत्ता मार दिया, कमिश्नर साहब को हेल्प, ये गाय को मार दिया, डीसीपी साहब गो हेल्प. So that confidence is there, and that feeling that yes, it's doable. Everything is doable. That feeling is there. So I would say I am more confident and more equipped with resources, with volunteers, with benefactors, and with sponsors to maybe increase the work which I've been doing. The idea is not just to help 3 or 4 or 10 or 1,000 animals. The idea is to bring a change wherein every animal keeps on getting help throughout their life. And so, yeah, but you spoke about these more external factors, but internally, what has changed in you with so many animals coming to your bosom and getting healed? I think I have become a better person. I was an antisocial before. So मेरे को ना लोगों से स्मॉल टॉक्स करना, शादियों में जाना, जन्मदिन में जाना, तैयार होके कहीं जाना, ब्यूटी पार्लर जाना, मेरे को ये सारी चीजें I used to step away from them. बचपन से. It's not that I was an introvert, but I never had any, what do you call it, interest
शादी में जाना है, नए कपड़े पहनने नहीं, कभी भी नहीं था। घर पे रहना है, अपने कुत्ते का ध्यान रखना है, मम्मी पापा शादी में जा रहे हैं, दैट वाज एक्सेप्टेबल एंड दैट वाज अ हैप्पी लाइफ, है ना। तो वो जो जो इंटरनल चेंजेस आई हैं, आई एम अ बेटर पर्सन, आई एम मोर मेच्योर, आई एम एबल टू रिलेट टू एनिमल्स वेल. My animal behaviorist skills which you need to converse or to know animals, it has increased. My ability to properly converse with people has definitely increased. So all in all, I would say that yes, I am a better human being now, and I would strive to be more better with each coming day. And animals have the power to change you into a better person, into a very good human being. Animal abuse. There are so many cases of animal abuse. I believe even in Corona times, maybe Many not abuse, but because of Corona, people abandoned their pets. Yes. So how can we as a society come over this? हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? Do we need to build something in our education system? कहाँ पे lack है? Sir, education में, है ना, अगर हम अपने schools में बचपन में ही compassion की class introduce कर दें, just by collaborating with local NGOs. So compassion is something which can be shown and experienced. It cannot be taught. Yeah. Yes. So schools can start just the basic, like compassion. There is a school, I'll give you an idea. Pathway School, Noida. Ji. Their 9th to 12th students, they have been working with me for past 2 years. And they have worked on adoptions themselves. They have gotten dogs and puppies adopted. They have worked on rescues. They have raised Dettol, cotton, medicines, bandages. And those are just 9th and 10th में पढ़ने वाले बच्चे, कहाँ टाइम होता है उनके पास जानवरों के लिए सोचने का. But they are doing it because the school has launched that, that do good kind of campaign into their curriculum, and it's an optional thing, which is good. Not everyone would go into animal welfare or animal rescue, but that option has to be there. How do we tell our children that other than books and humans, there are other things which live with us, which rely on us, which look up to us? Yeah. So yes, basically the education system. Number 2, it's high time the government and the citizens come together to launch awareness workshops. It's very much important. Why does a person abandon a pet? Kyun kiya abandon? Many reasons. Financial crisis. Owner बीमार हो गया, रखना ही नहीं है, डॉग काटने लग गया है, बेटी के लिए लाए थे, बेटी की शादी हो गई, बेटा हॉस्टल चला गया, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं. Many reasons. इनमें से एक भी रीजन ऐसा नहीं है जो कंट्रोलेबल नहीं है. सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं. Do we want to do it? We don't. बच्चे को तो छोड़ के नहीं जाते ना जब विदेश जाते हैं, साथ ले जाते हैं. कुत्ते को क्यों छोड़ के जा रहे हो जब ऑप्शंस हैं ले जाने की? So awareness, that awareness, the moment we understand that animals have a soul, they have a heart, and they are not stupid that they don't understand what we are doing. They know everything. The moment I take out an ironed kurta from my almirah, my dogs know I am going outside. So they know it. How do they know it? Because they have got brains. They are not stupid. So when we are abandoning an animal, we just need to think, what if we were in its place? How would we feel on the road, struggling for food and water, being beaten by other dogs? Because dogs do not understand that animal is abandoned. The street dogs will think that animal is a threat. It's a new animal to the territory. हमने तो सड़क पे फेंक दिया, हमने शेल्टर जाके फेंक दिया, हमने शेल्टर में अंदर ये भी जाके नहीं देखा कि कितने बीमार और हजारों कुत्ते भरे हुए हैं. हमारा कुत्ता सांस भी नहीं ले पाएगा, डर के मारे उठेगा ही नहीं. So the moment we start thinking beyond dumping, beyond abandoning, कि उसके बाद क्या होने वाला है, अगर हम वो सोचेंगे ना, हम कभी नहीं कर पाएंगे. मुझे रोज कॉल्स आती है, मैम मैं कुत्ता नहीं रख पा रहा, कुत्ता नहीं रख पा रही. I ask their reasons. If they are short-term reasons, I try to give them options wherein मैं तुम्हारा कुत्ता कुछ दिन रख लेती हूँ, resolve your issue, then take the dog. सारे नहीं मानते, कुछ मान जाते हैं. तो the point is कि अगर अवेयर नहीं करेंगे तो कैसे मानेगा वो. मैं उसको बोलती है तू कुत्ता छोड़ जा, मैं तुझे कुछ नहीं समझा रही, वो छोड़ जाता.
मैंने उसको समझाया कि ठीक है, परेशानी है, इसको ऐसे करके देखो, नहीं होगा, देन वी टॉक अबाउट अबैंडनिंग और लीविंग द डॉग। तो अबैंडनमेंट सिर्फ कोरोना से नहीं हुए हैं, अबैंडनमेंट कोरोना से पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। आज सुबह एक लैब्राडोर मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर अबैंडन हुआ है, परसों एक नोएडा सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन पे अबैंडन हुआ था। तो अबैंडनमेंट तो चल रहा है, कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, इंसानियत से लेना देना है सारा का सारा। हमें सुधरना है, कोरोना ने भी नहीं सुधारा, लेकिन हमें सुधरना जरूरी है। सवाल शायद मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी पूछूंगा जी। ये पूरे रास्ते में एनी गिविंग अप मोमेंट्स? नहीं, थैंक गॉड नहीं। परेशान बहुत हुई, ऐसा भी हुआ कि I should die. There are people who bring you down. Animal welfare is not an easy thing to do. Lots of politics you have to face. I don't know why. लोगों को लगता है शायद competition है, इसका नाम ज्यादा अच्छा है. So things, conspiracies, things keep on happening. Bad things, being called names, things. But मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा. कोई मुझे कुत्ता वाली बोलता था, मैं हंसती थी, बोलती थी thank you, such a nice name. और उस हंसने से ना फिर वो कुत्ता वाली से थोड़ा सा उन्होंने उसको और अपग्रेड करके द डॉग मदर कर दिया, तो विच वाज लाइक ओ गॉड थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने थोड़ा सा तो एक लेवल मुझे अप दिया, बट देन अगेन कुत्ता वाली वाज सच अ नेम, इट स्टिक टू मी फॉर इयर्स। अभी भी मुझे कोई नया बंदा फोन करता है, कावेरी जी कुत्ते वाली बोल रही है क्या? एंड इट्स लाइक इट्स नॉट अ बैड वर्ड टू माय इयर्स. I feel proud to be associated with the job which I have chosen for myself. And giving up moments तो कभी नहीं, और कभी परेशान भी हुई तो had my husband Yashraj, he was always there. कहता लोग तो करेंगे, करने का काम है, जानवर की तो कोई गलती ही नहीं है, तो कभी giving up नहीं. Is he around with you at this time? No, he's in Uttarakhand. The Uttarakhand shelter is in final progress, so he has to be there with the construction labor. Understood. So building over there is very tough. So he has to be there all the time. So he would come, he comes every 25, 30 days for 2-3 days, then he goes back again. Wow. मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ अभी कि मैं बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ, बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और कभी कभी सभी के जीवन में कुछ ना कुछ सवाल आते हैं, मायूसी आती है, लेकिन आप लोगों से बात करके एकदम ऐसा इंजेक्शन लग जाता है कि क्यों, इसलिए जानवरों के साथ रहोगे ना हर्ष जी, मायूसी कभी आएगी ही नहीं, आपको वो आने ही नहीं देंगे. हाउएवर सैड, मैं कितने भी खराब मूड में घर में घुसूं, my dogs, my monkeys, my cat, my rabbit, they all love me so much कि वो बाहर की जो स्ट्रेस और बकवास थी ना, वो वहीं रुक जाती है. And the only thing which I have on my face when I'm inside my home or at my sanctuary is a smile. So giving up की तो option ही नहीं है. They are such healers. They heal you mentally and physically and psychologically. So I am lucky, as I keep on saying, I'm very lucky. मैं कुछ सालों से वेदांत पढ़ रहा हूँ, और वेदांत में एक जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है वो है अद्वैत का, कि भाई अभी दो चीजें अलग अलग नहीं हैं, तत्व सब में एक है. और आपसे बात करके इतना मुझे उस चीज की याद आ रही है कि आप वो तत्व देखकर सब में, कि वो तत्व एक है, वो तत्व एक है देखकर वो तात्विक ज्ञान लाकर आप सबको साथ में ला रही हैं और इतना खूबसूरत काम कर रही हैं. मैं चाहूंगा कि मैं आपसे आपके पास आके मिल सकूं और हम कुछ थोड़ा सा लंबा कवरेज कर सकें आपके काम का और आपके एनिमल्स का. बिल्कुल हर्ष जी, एनी टाइम आप लोगों का हमेशा स्वागत है. और मेरे को तो बहुत फक्र महसूस होता है जब मैं अपने रेस्क्यू एनिमल से किसी को भी मिलवाती हूँ. दे आर अ साइट टू लिव फॉर, तो एनी टाइम. And I think I don't know if you have ever thought, but how could you give us a kind of a do-it-yourself thing for establishing in small manner something like what you are doing in different cities? देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है. एक फंडा है जो मैं बोलती हूँ लोगों को फॉलो करने को, कि देर आर 7-8 things which you can do to help animals or even to help underprivileged humans, है ना? So the first thing is you volunteer. Yeah. Now
Not everyone can volunteer, but some can. Yeah. The second thing is you rescue. Mm. Not everyone can rescue, Mm. but someone can. True. The third thing is you adopt. Not everyone can adopt, but I have adopted hundreds of dogs, so someone can. Yeah. So someone can't adopt, they can foster. Yeah. एक dog है, उसको घर की जरूरत है. While we are looking for a home, आपने 15 दिन के लिए उसको foster कर लिया. Cat है, calf है. If you even can't foster, then you sponsor. Yeah. If you can't sponsor, then the least and the best you could do is educate. So these are small steps of any kind of welfare. Don't just associate it with animals, associate it with any good thing, any social cause. And if there is a team of a couple of volunteers, a couple of rescuers, a few fosters, few adopters, and few people who just make people aware, then it will work in any city. Wonderful. How succinctly put by you. Thank you so much for that. जी. एकदम संक्षेप में पूरा फॉर्मूला सर, देखो सब कोई सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर कोई इतना सा हमेशा कर सकता है. स्मॉल थिंग्स एज यू से. कावेरी जी, कोई और बात? आई हैव डन, मैं जो भी होमवर्क कर पाया और जो मेरे को अपने अंदर से पूछना था, मैंने पूछने की कोशिश करी है. इफ देयर समथिंग एल्स यू वांट टू शेयर एंड टॉक अबाउट ऑन दिस? मैं तो बस देखिए यही कहना चाहूंगी कि हर कोई तो एनिमल लवर नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल है. लेकिन हर कोई एनिमल हेटर ही बन के रहे, ये जरूरी नहीं है ना. हम अच्छा नहीं कर सकते, हम किसी को खाना नहीं खिला सकते, दवाई नहीं दिला सकते, कोई बात नहीं, हम उसे कष्ट ना पहुंचाएं. अगर हम इतना भी कर लेंगे तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है. जो लोग कुत्तों से डरते हैं, कुत्ते पसंद नहीं करते, मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे से आके मिलिए. खतरनाक से खतरनाक कुत्ते से मैं आपकी अगर दोस्ती ना करा दूं तो मुझे डॉग मदर कहना छोड़ दीजिएगा. द पॉइंट इज, हमें ट्राई करना जरूरी है. वो जानवर है, वो अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर पाएंगे. इट हैज टू कम फ्रॉम आवर साइड. एंड अगर हम साफ मन से करने की कोशिश करेंगे, एवरीथिंग इज डूएबल. दैट इज इट. बिल्कुल. और मैं आपके पास आने वाला हूँ ये डर निकालने के. बिल्कुल हर्षी. और सिर्फ कुत्तों से ही नहीं, पर बाकी जानवरों से भी. आपको मैं खरगोश और आपको बंदर और आपको कैट, गधे और गायों से भी मिलाऊंगी. बहुत अच्छा लगा कावेरी जी आपसे मिलके. A lot of good wishes your way, a lot of blessings from different subscribers to this podcast, to different people who have attended this podcast. A lot of happiness towards your way and a lot of support towards your way in this. Thank you so much. Thank you. Thank you very, very much. It has been Thank you, Harshi. See you soon. Pleasure. आज मुझे एक चीज पता चली कि किसी पॉडकास्ट में अगर होस्ट स्पीचलेस है तो that podcast is going to do very, very well. Thank you. Thank you. And it was an honor to talk to you, and I would love to see you soon. Thank you very much. And I'll be there very, very soon with you.